तो अगर आप सबको ऑलरेडी पता नहीं है, MFN 17 में बैंटमवेट टाइटल हासिल करने के बाद रविंद्रनाथ के हेड कोच दिविज पियालामा ने रिसेंटली एक दूसरे इंडियन MMA फाइटर को कॉल आउट किया है। उनके हिसाब से उनके फाइटर यूकी एंगदेम्बे को अपनी नेक्स्ट फाइट में बागी मनदीप प्रजापति, जिनका 4-1 का रिकॉर्ड है, उनको फेस करना चाहिए। उन्होंने एक कॉल आउट निकाला है अपने प्रोफाइल पे, लॉक एंड रोल के प्रोफाइल पे, नेपाल वॉरियर्स चैंपियनशिप के प्रोफाइल में कोलैबोरेशन पोस्ट के साथ, saying the fight to make, no doubt, is Yuki Angdembe versus your poster boy Bagi Mandeep. जैसे कि कोच दिविज ने मेंशन किया यहाँ पे, उनके हिसाब से बागी मनदीप के साथ फाइट अच्छी होगी। ऑडियंस बहुत बड़ा है, वी ऑल नो बागी मनदीप का बहुत बड़ा ऑडियंस है। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, ही हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोइंग्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। एंड यूकी ऑल्सो, यूकी एंगदेम्बे जो एक नेपाली फाइटर है, ब्रॉट अप इन द यूके आई बिलीव, और उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ हिज टाइम ट्रेनिंग बाली में ही स्पेंड किया है एट सोमा फाइट क्लब रिसेंटली। इसी की वजह से उन्होंने रविंद्र को भी सेटल इन करने में हेल्प किया, रविंद्र और कोच दिविज को इन बाली। सो इनका बहुत क्लोज बॉन्ड है ऑब्वियसली, एंड नेपाली फैंस हमने ऑलरेडी देख लिया है कितने इंटेंसली अपने फैंस को फॉलो, अपने फाइटर्स को सपोर्ट करते हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली आई टोटली एग्री, ये बहुत बड़ी फाइट हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा आइज़ होगी। कीपिंग इन माइंड जो लास्ट इवेंट था जहाँ पे नेपाल के फाइटर आए थे रविंद्र धांत MFN में, और MFN को इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले। आई थिंक ओवरऑल कार्ड भी बहुत बड़ा था जिसकी वजह से व्यूज़ बहुत अच्छे आए, बट देर इज़ नो डाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट द नेपाली फैंस हैव हैड टू द व्यूअरशिप। सो ऑन अ व्यूअरशिप साइड आई टोटली अग्री, ये काफ़ी मज़ेदार फाइट है। बट एक बार चल के इन दोनों फाइटर्स के रिकॉर्ड्स देखते हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस मैचअप कुड एक्चुअली प्ले आउट, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड माई ओपिनियन ऑन दिस, ठीक है। तो यूकी एंगदेम्बे का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ही इज़ नेपाली, बट ही हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रेनिंग इन द यूके। सो अगर आप इनका, सो एज यू कैन सी इनिशियली हिज प्रोफेशनल रिकॉर्ड इज 6-3 compared to Mandeep, who has a 4-1 record, okay? But even before we talk about इनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड, एक बार चल के यूकी का एमेच्योर रिकॉर्ड देखो, ठीक है। तो आई कुड बी रॉन्ग, बट ये जो सारी लास्ट फ्यू एमेच्योर फाइट्स है यूकी की, he has a 7-2 record, but most of these fights, I could be wrong, but are in the UK. So you can imagine that the level of competition that he faced as an amateur was very, very high compared to the level of competitions amateurs face here. UK में इंडिया से बहुत बेटर सीन है, एंड केज वॉरियर्स में उन्होंने एक एमेच्योर की तरह कम्पीट किया, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है फॉर एन एमेच्योर, 7-2. So he's worked really hard. I believe he might have won a belt also. Yes, he won a title fight as an amateur against George Tanasa. ये 2020 में था। तो 2021 में इन्होंने अपना प्रो डेब्यू किया, पहली फाइट हार गए लूक रायली के अगेंस्ट। उसके बाद से he's been doing well, I would say. His most recent fight he lost by round 1 submission against Ben Watson. Ben Watson का going into this fight 8-2 का record था, so he had a little more experience than Yuki. So I guess Yuki fell short there. But compared to the kind of competition जो मनदीप ने face किया है, I don't think the level of competition is even close. कोच दिविज ने अपने इस इंटरव्यू में, इस कॉल आउट में, अगर आपको याद है, अभी मेंशन किया था कि ही फील्स लाइक MFN इज प्रोटेक्टिंग मनदीप। आई डोंट नो इफ दे नेसेसरली प्रोटेक्टिंग हिम, बट ये तो है कि ही इज़ अ बिगर स्टार फॉर देम, सो या मे बी दे कुड हैव गिवन हिम टफर फाइट्स। आई कैन टोटली अग्री ऑन दैट। प्लस ही गेट्स अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। हम सबको याद है लास्ट वाली फाइट में जहाँ पे MFN 16 में वो लड़े थे कपिल के अगेंस्ट, उन्होंने 5.5 kg वेट मिस किया था। सो ही गेट्स अ फ्यू एक्सेप्शंस फ्रॉम MFN फॉर श्योर। सो मूविंग ऑन, एक बार रिकॉर्ड चल के देखते हैं मनदीप भाई का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फाइटर्स दैट वी हैव ऑन द रोस्टर, डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क, ही वर्क्स विद एन ऑर्फनेज एंड मेक श्योर कि ही इज अपलिफ्टिंग सोसाइटी इन वट एवर वे ही कैन, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा काम करते हैं। सो आई ऑब्वियसली कांट फॉल्ट हिम फॉर ऑल द गुड वर्क दैट ही डज, बट इफ वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फाइटिंग, प्रोफेशनल फाइटिंग, हमें उस चीज़ के बारे में भी बात करनी होगी। जो पहली फाइट थी इनकी सोल ऑफ वॉरियर्स में, वो एक यूनानिमस ड्रॉ था अगेंस्ट आकिब अली। आकिब अली एक जाने माने फाइटर है इंडियन MMA सीन में, जिनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है रिसेंटली, बट दैट टाइम ही वाज 2-0 व्हेन ही फेस्ड मनदीप, एंड मनदीप वेंट टू अ ड्रॉ। आफ्टर दैट ही फॉट करण सिंह यादव। उनका इस फाइट में करण सिंह का डेब्यू था, उनके अगेंस्ट ही वन अ यूनानिमस डिसीजन, ठीक है। सो ही गोज टू 1-0। सेकेंड फाइट ही लूजेज अगेंस्ट मायरिडन न्यूमाय, जो मायरिडन उस टाइम पे अपना डेब्यू कर रहा था। मायरिडन की फर्स्ट फाइट थी
अगर आप नहीं बिलीव करते मुझे, आप यहाँ देख सकते हैं 4-1 माइरिडन, एंड हिज फर्स्ट विन वॉज अगेंस्ट मनदीप प्रजापति in his debut fight. So he lost his third fight to a debutant. His next fight Mandeep की was against Abu Samad, जो एक I believe 18 या 19 year old थे. उनको ग्राउंड एंड पाउंड से राउंड 1 में फिनिश किया. ये भी अबू समद का पहला प्रोफेशनल फाइट था, एंड उसके बाद से वी हैवंट सीन अबू compete at all. 2023 से where he lost to Mandeep, Abu hasn't competed again. Then you go on to Karan Singh Jadhav. So he got a rematch with Karan Singh Jadhav. I don't know how that fight made any sense when Karan had already lost unanimous decision. So he got a rematch and again he won a unanimous decision. So right now Karan, इनके जो opponent है उनका 1-2 का record है, और दोनों बार वो मनदीप से ही हारे हैं. एंड देन जो लास्ट फाइट थी आप सबको पता ही है, MFN 16 में थी, जहाँ पे कपिल के अगेंस्ट वो 5.5 kgs वेट मिस करके आए. ही गॉट हिज पर्स एंड देन ही वॉज एबल टू गेट अ ग्राउंड एंड पाउंड विक्ट्री ओवर कपिल थैंक्स टू हिज रेसलिंग. सो येस, मनदीप का जो ज़्यादा हैवी फोकस पॉइंट है इन हिज गेम इज हिज रेसलिंग. I haven't seen a lot of submission threats from him. His striking seems rudimentary at best. Kabhi kabhi it's maybe it's improved. He could have some power. I don't know. I haven't seen him use it against his opponents. He likes to close the distance and get the fight to the ground. तो अगर हम इस मैचअप की बात करें, honestly, like as much as I would love to see another Nepal versus India matchup just because of how much hype it creates, I don't think Yuki versus Mandeep is the fight to make next. I don't think Mandeep is ready for someone like Yuki. Compared to Mandeep, Yuki has way better experience. He has a way better record also, I would argue. Even though he has 3 losses, the kind of opponents he's faced is far better than the quality of opponents that Mandeep has faced. So I don't think this will be an entertaining fight. I'm going to be honest. I think this could end with like a early finish for Yuki. Maybe I'm being biased. Maybe Mandeep could, turn the table and really shock everyone, but I doubt it. And another thing is ki I don't know, like when you miss weight by 5.5 kgs, I don't know how many times he's missed weight earlier, because this is another issue which is coming up again and again in our Indian MMA promotions and smaller promotions, is they do not disclose to us what the fighters weighed in at. और वो भी मैं उस वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बारे में. All promotions need to start disclosing to the public on the day of the weigh-ins what exact weight fighters weighed in at. Many a times in MFN and in other promotions we have found out that कि बंदे ने 2 kg से वेट मिस किया और पब्लिक को 3 दिन बाद पता चल रहा है, 4 दिन बाद पता चल रहा है. तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे we already saw the way Coach Diwiz and his team held Warriors Co accountable to make sure they made weight. They will do that with Mandeep as well, and I honestly don't know what if he missed weight by so much last time, if he'll be able to make weight this time. And I don't think MFN wants to rely on someone who does not 100% make weight every time. इतना बड़ा event अगर होगा और both Nepali fans, Indian fans, MFN, everyone will get riled up, and we finally end up seeing that the fighter doesn't make weight. That will be very disappointing. So personally I feel like, obviously अगर हमें tape, तुम लोग को लगता है कि I should explain to you why I don't think this fight is good with tape, then I can do that too. But I just feel like Yuki can face another fighter. So instead of Mandeep, in fact, I feel like we have another fighter who could be a better option for Yuki to face, where Yuki will have an advantage. If he beats Mandeep, he's not going to get a great in terms of shine on his record, because it's not like Yuki it's not like Mandeep has बहुत better record than Yuki है ना. उसका तो 4-1 का record है. So technically Yuki will be fighting backwards. पर एक दूसरा फाइटर है जो मुझे लगता है एक अच्छी फाइट दे सकता है, हमारे लिए एक एंटरटेनिंग फाइट करवा सकता है विद यूकी, एंड वो है साहिल राणा. साहिल राणा को हमने रिसेंटली सेम कार्ड पे ही देखा था गेटिंग अ विन अगेंस्ट दुष्यंत. ऑब्वियसली काफ़ी लोग के हिसाब से इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल. They wanted many people believe that Dushyant won, and I can totally see an argument being made, but even I had Sahil winning that fight. So by split decision he got the win against Dushyant. 7-1 का record है, right? He wants to stay active, and I feel like this will be just the right step up. इससे पहले उन्होंने यूकी जैसे competitor को नहीं face किया है. I could be wrong, but I have a feeling they might have trained together. सुनने में आया था कोच दिविज से कि ही वांटेड दिस फाइट टू हैपन, बट आई थिंक उस टाइम पे साहिल wasn't willing to take that fight. Whether that is true or not, I have to hear from Sahil. But
I feel like this is a much better fight for all of us in terms of क्या skill set matchup देखने को मिलेगा हमें. It might be a closer fight, so it will be obviously that would make the fight a little more entertaining for us to watch. But I feel like this will be a better matchup for Yuki and Sahil as well. I think Yuki he gets an opportunity to fight someone who has a better record than him on paper, and at the same time Sahil Rana gets to face an opponent who will arguably be his toughest fight for sure, because I don't think he's faced anyone as well rounded as Yuki. You could argue Clinton, but Clinton has been so inactive, and we haven't seen him in the best shape in his recent fights, the last few fights. So I think this would be a great fight for us to watch at MFN 18, hopefully. So instead of Coach Diwiz का जो demand है, which is to put on Yuki versus Mandeep, this would be my suggestion. ये मेरे थॉट्स थे इस पे. मैंने आपको रीजनिंग दे दी वाई आई थिंक यूकी वर्सेस बागी इज नॉट द फाइट टू मेक. बट ऑब्वियसली हु नोज, MFN might be looking to put on like a very big show, and they might think that because of Mandeep's following he could gain a lot of more get a lot of more viewers to the fight. I feel like Sahil might bring the same amount of viewers. I feel like in any case the entire of Nepal is going to turn up to support their fighter, so viewership का tension नहीं लेना चाहिए. We should in fact be looking at a fight that will be much more entertaining, much more close and challenging for both fighters to a certain extent, right? So these were my thoughts. काफ़ी पहले actually call out निकल के आया था, but I was busy, I was covering other events, so I thought I'll wait. And आज मेरे पास time था, so I thought I'll let you guys know. Let me know what you guys think. If you think that MFN should book Yuki versus Mandeep, or MFN should book Yuki versus Sahil Rana, आपको क्या लगता है, क्या better choice है? Let me know in the comments. Make sure you like this video, share with all your friends, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ.